Add ast. Haven't you heard? There's a... Ancient alchemy. जय श्री राम भाई। जय श्री राम, जय श्री राम। आपका हमारे स्ट्रीम पर बहुत स्वागत है भाई एलिगेटर भाई। थैंक यू फॉर कमिंग। फर्स्ट आए हो आप। जय श्री राम। सात दिन बाकी है अभी काजुआ को आने के लिए। देखते अब क्या क्या होता है अपने। Time to act. Let me weave you a verse. Go and flat! I swear by my sword. Show them. Come on out. Show them. Come on out. I see everything. The Temple of Wisdom. Rain outlines your fate. Rain Cutter. Barbados, guide us. Right now, right here. Emerge. Nothing lasts forever. Right here. Emerge. किसके बारे में? Witness the power of कंसिस्टेंट। हेलो शेखर सिंह भाई, कैसे हो? वेलकम टू आवर स्ट्रीम। अरे कंसिस्टेंट मतलब बोलो पण त्याला तेवढं। अंशु कुमार भाई थँक यू फॉर कमिंग। अरे मग आवाज जास्त नाही ना, आवाज मोठा करला पण त्याला ऐकत नाही ना। इकडं आपलं बाकीचा जास्त आवाज असतो ना, बाकीचं कुर 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 कुर, बाकी छोटा जरी आवाज असला तरी इथे इकडे जातो।
इतना कंसिस्टेंट कैसे? अरे भाई मतलब अभी एक बार आप लाइव स्ट्रीम करने जाओ ना, आपको पता चल जाएगा। फिर रहना पड़ता है भाई, रहना पड़ता है, क्योंकि अगर नहीं रहे तो अपने पॉपुलैरिटी नहीं बढ़ती। मतलब रेगुलर नहीं करे ना तो अपनी स्ट्रीम आगे नहीं बढ़ जाती, और नए नए जो व्यूवर्स आते हैं ना वो हमारी स्ट्रीम पर नहीं आ पाते। अलकेटर भाई और हाँ अंशु कुमार और शेखर सिंह भाई, आपका हमारे स्ट्रीम पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू फॉर कमिंग। तो अलकेटर भाई अभी मतलब लगातार करना, मतलब मैं खुद कर लेता भाई। मतलब ऐसा आदत सी लगी अभी। Make yourselves at home. Rain outlines your fate. Let me weave you a birth. Right now, emerge. I swear by my sword. A sight to behold. Right now, emerge. I see everything. Sharing my knowledge. Witness the power of Gua. Barbados, guide us. Show them. Know my sword. Time to act. Let me weave you a... Everyone hold hands. Right here. Emerge. Right now. ओके डन। अगर जा रहे हो, मतलब जो भी हमारी स्ट्रीम को छोड़कर अगर जा रहा हो भाई, तो बताते जाओ, ठीक है? बताकर जाते जाओ, क्योंकि हमें तो पता चलना चाहिए कि कौन कौन हमारी स्ट्रीम पर लगातार रहता है, ठीक है? उतना तो करते जाओ, क्योंकि अभी मुझे लगता है कि एक ही लाइव है हमारे स्ट्रीम पर। लाइव एक ही दिखा रहा, ठीक है? तो जो है वो हाय भेज दो फिर से मुझे। 6 मिनट बाकी यार, इसको जल्दी से हो जाए यार। 26 सेकंड है अभी। इसको अभी कंडेंस रीजन में मैं हूँ। अच्छा 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 अच्छा, फिर वो दोनों चले गए होंगे। अच्छा अच्छा, अंशु कुमार और अलकेटर भाई चले गए होंगे ऐसा लगता है मुझे, क्योंकि मेरे यहाँ पर भाई कभी कभी लाइव में गलत दिखा देता है। देखो 1 लाइव दिखा रहा है इधर, ये गलत भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते। हो जाए जल्दी, पूरा हो चुका, चलो डन है। अपने पास एक कंडेंस रीजन, इसको यूज़ कर लेते हैं अभी मैं आप सभी को दिख रहा होगा कि भाई मैं अभी इसकी फार्मिंग क्यों कर रहा हूँ, ठीक है? तो आप सभी की जानकारी के लिए मैं अपने शिंगचू को सैंड्स में, ठीक है, सैंड्स में जो उसका अटैक है वो अच्छा है, मगर मुझे यहाँ पर एनर्जी चाहिए, वो ज़्यादा एनर्जी जनरेट करने के लिए 213 है, मगर मुझे और बढ़ाना है। इसलिए अभी सैंड्स में मुझे ER चाहिए, जो कि मेरे पास नहीं है। सैंड्स में मुझे ER चाहिए था, जो कि मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं उसको फार्म कर रहा था, ठीक है? थोड़ा बहुत और 120 हो चुके हैं, इनको क्राफ्ट कर लेते हैं अभी। तो अपने पास 4 और चांस है, एटलीस्ट 4 और चांस है। अगर मुझे मिल गया तो अच्छी बात है, होप सो अगर मिल जाए तो अच्छी बात है यार, मगर मिलते नहीं आर्टिफैक्ट। भाई आर्टिफैक्ट फार्म करना काफ़ी कठिन होता है जेंशिन में, अच्छे आर्टिफैक्ट मिलना काफ़ी कठिन होता है।
एक कैरेक्टर को बिल्ड करने के लिए F2P प्लेयर को, मैंने सुना था कि एक कैरेक्टर को बिल्ड करने के लिए एक बंदे ने पूरा का पूरा साल लगा दिया, ठीक है, एक पूरा साल लगा दिया उसने एक कैरेक्टर को बिल्ड करने के लिए। मगर भाई उसने ऐसा बिल्ड किया, मतलब काबिल तारीफ़, ठीक है, काबिल तारीफ़ था यार, सच में यार। मतलब उसने एकदम कतई बढ़िया बना, मतलब बढ़िया बिल्ड किया उसने अपने कैरेक्टर्स को। 1 मिलियन के आसपास उसका जा रहा था, हाँ 1 मिलियन के आसपास उसका डैमेज जा रहा था विदाउट बफ, विदाउट फूड बफ, ठीक है। एक बार फिर से बता दूँ, विदाउट फूड बफ वो 1 मिलियन के आसपास जा रहा था। वही तो मेरे भाई, छोड़ दे। Ring cutter, emerge. I swear by my sword. Nothing lasts forever. Right now, right here. ये सबसे बढ़िया हीरो लगती है। I see everything. The Temple of Wisdom. छोड़ दे। I let my guard down. No, my sword. Witness the power of Gpay. Barbados, guide us. Hey! Emerge. A sight to behold. नहीं, हेल्प नहीं भाई, मैं आता हूँ तुम्हारे वर्ल्ड में। अगर आपको भी फार्मिंग करनी है तो आ सकते हो। I see everything. No, my sword. अगर आपको भी फार्मिंग करनी है तो आ सकते हो, मगर मुझे भाई मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत है, क्योंकि मैं अकेले भी इस डोमेन को फार्म कर सकता हूँ। उतने अच्छे मेरे पास आर्टिफैक्ट है। मगर आपको भी फार्मिंग करनी हो तो आ सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई अच्छा पीस है यार ये तो, शिवेनावा वाला। मगर मुझे शिवेनावा नहीं चाहिए भाई, योइमिया के लिए शिवेनावा सबसे बेस्ट है, उसके अटैक के लिए, अटैक % के लिए उसके लिए बहुत बढ़िया है। 2 पीस मेरे हिसाब से 2 पीस क्रिम्सन विच ऑफ फ्लेम्स और 2 पीस शिवेनावा अच्छा ही है, पैरो डैमेज बोनस। और साथ में फार्म करते हैं, राइट डेन के लिए फार्म करना है मुझे। अच्छा आ जाओ फिर, ठीक है, आ जाओ, साथ में फार्म करेंगे अपन। चलेगा, कोई बात नहीं। और हाँ, अगर आप सभी को अगर बैकग्राउंड में कुछ नॉइज़ सुनाई दे रही हो तो भाई वो भजन है हमारे यहाँ, ठीक है। जो भी लाइव है जल्दी से जल्दी हमारी स्ट्रीम को लाइक कीजिए सभी, कृपया हमारी स्ट्रीम को लाइक कीजिए सर जी, सभी से ये गुजारिश है। Right here, right now. भैया इसका क्वेस्ट पूरा करना पड़ेगा यार, ये यहाँ की बारिश रुकनी चाहिए। यहाँ पर एक क्वेस्ट होता है, रीरूरू तो ये आपका अकाउंट है क्या? अच्छा है, आ जाओ रीरूरू। अरे नहीं भाई, गंदा बचा मैं। इसके अलावा हमारे पास ये होना चाहिए, इसको रख देते अपन, ठीक है, हीलिंग के लिए। ओके चलो रेडी। आजा भाई,
शंगलिंग और बेननेट, अच्छा 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 अच्छा, बेननेट, अच्छा अच्छा ठीक है, बेननेट ले लेता मैं। सैपवुड भाई इसको बढ़ाना पड़ेगा मुझे यार, इन्हेंस करके, मगर इसके लिए अभी ये फ़िलहाल तो इसी को रख लेते। आर्टिफैक्ट्स, सो फोपिस नोब्लेस, ये दरवाजा बंद कर यार, काय चालू तुमचं? नोब्लेस नोब्लेस नोब्लेस, वेयर इज़ माय नोब्लेस? ये रहा। सिंचू भी ले लो, हाइड्रो, अच्छा 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 ठीक है, हाइड्रो वाला है, ठीक है डन। वेपरेज वाली टीम चाहिए इनको लगता है। तो हाँ विठ्ठल बरवा, आजा रीरू, जल्दी से आ जाओ। ओके डन। Rain cutter. Rain outlines your fate. Know my sword. Let's light it up. Teamwork is dreamwork. Take flight. Witness the power of Gopa. Embrace the ice. Take care. Let's light it up. My opponent. Get them. क्या हो गया? खत्म, बहुत बढ़िया, Time to act. एक नंबर भाई, कतई जहर। यार साइंस, यार साइंस, यार साइंस दे दे मुझे प्लीज। बहुत बढ़िया मिल चुका है मुझे, मगर उसके सबस्टैट एकदम बेकार है। सबस्टैट बिल्कुल बेकार है इसके यार। अटैक अटैक क्रिट डैमेज तो दे देते। आर्टिफैक्ट के मामले में, ठीक है, आर्टिफैक्ट के मामले में Teamwork is dreamwork. Let me weave you a verse. Rain outlines your fate. Time to act. Whirling snow. Everybody stand back. Rain cutter. Know my sword. Let's light it up. Teamwork is dreamwork. Embrace the ice. Witness the power of Gugwa. Rain outlines your fate. My apologies. ओके, Body and mind. ये बात मेरे भाई, ऐसी टीम होनी चाहिए यार। प्लीज़ मुझे दे दो यार साइंस में, ई आर साइंस, ई आर साइंस अच्छे है, क्रिट डैमेज है इस पर, मगर इतने अच्छे नहीं पीस, इतने अच्छे पीस नहीं यार। ये पीसेस अच्छे मिलने चाहिए यार, मतलब पीसेस अगर अच्छे मिले ना भाई तो मज़ा आता फिर खेलने में भी, मगर भाई उसके लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है यार। Time to act. जेंशिन वालों ने सिस्टम बड़ा अच्छा बनाया इन्होंने। Get them. Everybody stand back.
outlines your fate. Ring cutter. Kamisato out. Sumetsu. Time to act. Whirling snow. Nice and slice. I'm going in. So good. Take witness the power of Guwa. अरे तो यार रुक जा यार. Everybody stand back. अरे रुक जा तो. Know my sword. Rain outlines your fate. Rain cutter. मर जा जल्दी, मर जा खत्म. ओके डन. वी आर आउट ऑफ रेजन. डिफेंस सर्कलेट. बढ़िया है. ठीक है चलो अभी हम लीव होते हैं. अभी वी आर आउट ऑफ रेजन. रेजिन ज़्यादा यूज़ नहीं करने के मुझे यार इस कैरेक्टर पे. डेली के जितने आते हैं उतने यूज़ करने के. थोड़ी बहुत 2 रेजिन डेली के यूज़ करेंगे उतने काफ़ी है. डन. इट्स डन. थैंक्स फॉर कमिंग भाई. It's time to move on. We shouldn't stay here. ओके बाय बाय. बाय बाय. ओके हो चुका है अभी. चलो अपने बढ़ते हैं अभी अपने आर्कॉन क्वेस्ट की तरफ जो कि हमारा कल अधूरा रहा था. मैं अधूरा. आया कमेटिव कैसी है? एकदम बढ़िया भाई. कतई जहर थी भाई. अच्छा डैमेज दे रही थी वो. मेरे हिसाब से कितना दे रही थी देखो. चेक माई शंगलिंग. अच्छा शंगलिंग चेक करने के आपके. ठीक है चेक कर लेंगे. रुको जी. री रू ये रही. ये रही. अच्छा डेथ मैच. रुको यार काफ़ी सही है. ठीक है कोई बात नहीं. यार सफिशिएंट है यहाँ पर. डेथ मैच अच्छी है इसके ऊपर. ये क्या है? अटैक 2 पीस सेट अटैक भाई और 2 पीस एम्बलम. क्रिट डैमेज अच्छा है इसका. बढ़िया है भाई. नाइस सबस्टैट्स भाई. सबस्टैट आपका अच्छे मिले मतलब. फ्लावर पे भी ईआर ऑन साइंस भाई. ऐसा मुझे साइंस चाहिए था यार. ऐसा साइंस कभी नहीं मिलता मुझे. पैरो डैमेज ऑन गॉबलेट अच्छा है. बहुत बढ़िया है. क्रिट डैमेज ऑन सर्कुलेट है. हाँ क्रिट रेट वाला वेपन है तो क्रिट डैमेज वाला सर्किट अच्छा है. बढ़िया है भाई आपके. C2. अरे वाह. नॉर्मल अटैक. हाँ 2 पीस अटैक के लिए इसके लिए आपने उसको नॉर्मल अटैक बढ़ा दिया है. अच्छा है. अपने गोबवा का लेवल बढ़ाओ भाई. पायरोनेडो तो अच्छा है मगर अपने गोबवा का भी लेवल बढ़ाओ. काफ़ी सही डैमेज देगी वो. अटैक का सेंस नहीं डाले हैं इसलिए 2 सेट अटैक का डाले हैं. अच्छा. अरे अटैक का सेंस कहाँ होता है भाई? अटैक वाला सेंस क्या होता है? अरे भाई बाबा
ऐसे आर्टिफैक्ट लेकर अगर मैं जंग में उतर जाता तो मेरी वाट लग जाती। मेल्ट में 13 के मारती। अरे वाह वाह। हाँ मतलब डिफरेंट एलिमेंट को अगर एक दूसरे से भिड़ा दिया जाए तो बहुत अच्छा डैमेज देते हैं वो। जैसा कि मैंने बर्न किया था, बर्न। अरे ये क्या हो रहा है? अरे वाह वाह वाह। एक नंबर। अबे हम नीचे क्यों नहीं जा पा रहे हैं? नहीं यार, ये गलत सीन हो गया। हम यहाँ पर कैसे जा पाएंगे अभी? ठीक है, वहाँ पर गड्ढा है मेरे हिसाब से। तो फर्स्ट टाइम राइडन तुरंत मर गई। ऋषिकराज हो भाई, कल आप कहाँ गए थे यार? आप बिना बताए हमको कहाँ छोड़ के गए थे? अरे बाप रे, ये तो हम अंडरग्राउंड आ गए। वेलकम टू अवर स्ट्रीम भैया। हमारी स्ट्रीम पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैट में फर्स्ट टाइम राइडन तुरंत आज राइडन के सामने हम राइडन नेशनल लेकर गए और राइडन को तुरंत मार दी मेरी टीम। राइडन ने मार दिया। बढ़िया है यार। अरे कल गैरी की हेल्प कर रहा हूँ। अरे ओके ओके ओके, चलेगा। कोई बात नहीं। बेचारे को दूसरे स्ट्रीम पे मोस्टली सब बुली करते हैं। अरे काफ़ी ख़राब हुआ उनके साथ। अरे हमारे यहाँ पर आतिशबाजी हो रही यारो। अल्काट्रसर ओपी वो तो ओपी ही है। व्हाट्सअप, कौन सी स्ट्रीम? अरे हाँ, ऋषिक भाई ऑलवेज विथ कम बैक। अरे सॉरी अल्काट्रसर भाई आपके हाँ भाई अभी शेखर सिंह भाई थैंक यू। आपने ऐसा बताया, मतलब राइडन को मार दिया। काफ़ी कम देखा है मैंने। राइडन को मार दिया, मतलब मैंने काफ़ी कम देखा है ऐसा। बरं का आता भैया कसं चालतं ना, काय चालतं नाही ते? It's time to move on. We shouldn't stay here.
अरे ठीक है ठीक है ठीक है, रुको रुको, मैं थोड़ा बिजी था, ठीक है। हमारे पड़ोसी जो है ना, उनका एक्सीडेंट हो गया था, तो वो मेरे सामने आए थे, तो उनसे थोड़ा बात कर रहा था मैं, ठीक है। इसके लिए हम खेत चाहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए भाई मुझे मतलब उनका एक्सीडेंट हुआ था, इसलिए मैं उनको बोल रहा था कि राइडन का डोमेन में राइडन को जाओ, इजीली 100 के डैमेज देगी। ऊपर में जाना है, तुम नीचे क्यों करने जा रहे हो? ऊपर में जाना है, तुम नीचे क्यों करना जा रहे हो? अरे हाँ हाँ हाँ, अरे ये आर्कॉन क्वेस्ट है भाई मेरे, ये देखो देखो आर्कॉन क्वेस्ट है। मुझे यहाँ पर इसका दिखा रहा ना, ये देखो ये देखो, ये रिकमेंडेड एलिमेंट इलेक्ट्रो चाहिए, पायरो और ये वाला, ठीक है। शेखर भाई ये आर्कॉन क्वेस्ट है जो कि हमारा काफ़ी समय से रहा है, तो भाई अपन आर्कॉन क्वेस्ट कर लेंगे, उसके बाद बाकी सारे क्वेस्ट करेंगे, क्योंकि हमको वहाँ से फ्री एक्सपी फ्री फेट्स मिल जाते हैं। कटसिन It's full of life here. हाँ यस। This defies comprehension. It looked completely desolate from the outside. Yeah, and there's so many plants. It's so pretty. Sir Rahman. Huh? Me? Do you see another Rahman here? Are you mocking me? What do you mean, sir? Interpret it however you want, but there's something I'd like to draw your attention to. While this structure is clearly left over from King Deshret's civilization, the energy that flows in here is that of the Dendro Archon. तो यहाँ पर आपको ओल्ड एज की थोड़ी बहुत फीलिंग आएगी, तो लेट्स एंजॉय द आर्कॉन क्वेस्ट। आप सभी को मेरी तरफ से मैं आप सभी को बोलना चाहूँगा, एंजॉय कीजिए अपने पुराने दिन। Whatever you say. It's not like I have a vision. अगर आपको कोई बैकग्राउंड नॉइस या अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो, तो मैं अपना वॉइस चैट बंद कर लूँ क्या? नहीं, एक बार मुझे बता देना। अगर आपको कोई बैकग्राउंड नॉइस का कोई तकलीफ हो रही हो आर्कॉन क्वेस्ट में, तो मैं अपनी वॉइस ओवर बंद कर लेता हूँ। There's nothing to be angry about. Think of this as an academic journey. It does seem kind of strange. If that's true, then we might have to explore this whole area to find an explanation. Okay. बढ़िया यार तो। Okay. कैसे करते हैं मेरे भाई? अब क्या हो गया? कुछ तो भी हुआ है। ओके, कुछ तो भी हुआ था, ये रहा। हाँ, अच्छा ऐसा होता है क्या? डन, ये बात। अरे वाह वाह वाह, काफ़ी बढ़िया यार। तो एक्टिवेट एलिवेटर, वाह कहा यार। जेंशिन वालों भाई, मतलब जेंशिन वाले को एकदम बढ़िया यार है। तो अब क्या करना है हमें? एक्टिवेट करने का है, इससे ऊपर नहीं जाने का, अपने को नीचे जाना पड़ेगा। मुझे लगा इसके नीचे होता है क्या?
अरे रुको जी, Everyone hold थोड़ा hands. रुको, ठीक है, ये सभी का Know my दूंगा, sword. ठीक है। Body and mind. Emerge. Right now. इसको जरा थोड़ा कवर करो, इनको थोड़ा मार लूँ मैं। हाँ, जेंशिन वाले बहुत हरामी है, सही आर्टिफैक्ट देते नहीं है। वही सही कहाँ, ये सारे के सारे बंदों का यही कहना है, जेंशिन वाले सारे हरामी हैं। अरे बाप रे, इतने सारे। I see everything. Rain outlines your fate. Let me weave you. Emerge right now. छोड़ दे। ओके, यहाँ पर हमें आना पड़ेगा। उसके बाद आ चुके हैं। ओके, अरे क्यों भूल भूलिए यार, ये तो अरे बाप रे, यहाँ तो भाई Know my sword. Emerge. हाँ बोलिए सर जी। I see everything. Rain outlines your fate. Right here. फिलहाल तो हम भाई आर कॉन्क्वेस्ट कर रहे हैं अभी। पबजी आज जाते मेरा फॉर्म हो गया वापस, मेरा फॉर्म हो गया, वरना कोई नहीं बाद में अभी कभी। पबजी आ जाते मेरा, भाई फिर से टाइप करो प्लीज़, मुझे समझ में नहीं आप क्या कहना चाहते हो। यार तो सारी की सारी भूल भुलैया। और अब समझ में आया, यहाँ पर नहीं जाना था, ऊपर जाना था, उसके बाद एक्टिविटी एलिवेटर करना था, उसके बाद ये नीचे जाना था। मेरा मतलब पबजी आ जाते खेलने, मेरे हाथ फाइनली बैठ गए हैं गेम में। अच्छा आप समझ में आया, ठीक है। ये क्या होना है आपका? अरे भाई यार, यहाँ पर कैसे पहुंचे अभी? ऊपर भी नहीं जा सकते।
अच्छा ओके अब कहाँ जाना है Rain cutter. Emerge right here. Huh? Cha. जल्दी ओके अब क्या करना है आप एंजॉय कीजिए मैं चलता हूँ अरे यार ओके अब समझ में आया मुझे ओके डन अरे वाह वाह ये कैसे हुआ मुझे पता नहीं मगर जो भी हुआ अच्छा हुआ Personally, I think the idea. That's a sight to see. King Deshret's splendor surrounds us. There's so much vegetation here. It's different than what I expected. Sure are a lot of plants for a desert. That's what I call divine providence of King Deshret. दशरथ कहाँ लेके जा रही है भाई ये कहाँ लेके जा रहा है अपने को ओके अरे हाँ अब मुझे याद आया यहाँ पर हम पहले आए थे मतलब जो हमने It's getting brighter. Oh, it looks so beautiful. हम जो शुरुआत में अपन ना समर में मतलब आए थे ना तो यहाँ का सीन यहाँ पर दिखाया गया था मेरे हिसाब से ठीक है Wait. What's that? A load of flowers. And it looks like there's something among them. These are King Deshret runes. They left something behind. Yes. It's an elegy written in an ancient script. What does it say? Here lies our faithful priest Kasala. काय म्हणते कोण जर विचारलं मी काय खराला म्हणतो His wisdom is a miracle among the people, deserving of high praise and admiration. You can read ancient King Deshret script? Of course. Every student needs to master at least 20 languages before they graduate. ओहो He's not बढ़िया यार serious, right? एकदम तो सबसे बढ़िया गाना चला समोर बस ना तू बस ना कार ऊपर आके बस ना समोर कार ऊपर आते मतलब पाय गळने जगह में There's still something off about this place. बस इधर The elemental energy here is too concentrated. थोड़ा खाड़ लगा दे The scent of ये life. समझ Is it trying to tell us something? अकरा वाजली तर झोपायचं टाइम आहे
चपाती मला बारा करेक्ट बारा झोपणार होता 1 घंटा आहे माझ्याकडे अजून हो या Is this it? म्हणून आता दे मला पालखी काय आपल्या आता पालखी किती तारखेला 29 किती तारखेला होतो मी ते म्हणलं होतं हा सोमवार आहे मंगळवार बुधवार आणि गुरुवार Analyzing. There seems to be a hidden message among these skeletal remains. स्ट्रीम पर कोई है क्या नहीं सिर्फ ऋषिक भाई ने अपने आखिरी कमेंट छोड़ दिया यहाँ पर कौन है स्ट्रीम पर अभी Excellent. जो मेरी There's a बातें सुन रहा है device अभी from King Deshret's civilization in this gravesite. I'll transmit the information over and project it for everyone to see. Isn't sharing knowledge against the academia's rules? Yes. However, under the circumstances, I prefer you to see this for yourself. You'll understand after watching it. नहीं हो ठीक है लग ही रहा था मुझे क्योंकि आप बोल रहे थे भाई पुरानी Civilization is born of knowledge, but so too can knowledge be its demise. A disaster caught us unaware. It was knowledge that did not belong to this world. King Deshret brought this forbidden knowledge into our world, and it quickly spread like a plague. People's minds were filled with crazed whispers. Dark gray scales spread across their bodies. Even the land was stripped of its vigor. Only a desperate, deathly silence remained. Were it not for greater Lord Rukkhadevata from the forests, the damage would have been irreversible. She summoned the priests to build temples and infused into them the divine power of life. The disaster was miraculously tempered, and the embers of our civilization were preserved in Aru village. Alas, the miracle could not last. As long as forbidden knowledge continued to exist, it would forever blight this world. In the end, the proud king of the desert, my eternal lord, chose to sacrifice himself. I have spent my whole life since guarding one of these many temples. But now, my duty is coming to an end. As I close my eyes for the final time, the sight of that noble deity will appear in my vision once more. In helping King Deshret to eradicate forbidden knowledge, she exhausted her strength, and her form became that of a small child. How strange. Now that I think of her, I no longer have any fear of death, for I sense that the spirit of life will abide with me during my eternal sleep. Children of the desert, cling no longer to past grievances, but hold tight to the memory of this act of benevolence. What was that? Giving should by here. Welcome to our stream and thank you for coming. But mute करना कट सीन में. Yes. The priest's memories. बहुत बड़े कट सीन था यार एकदम बढ़िया था तो इसका मतलब जो किंग दशरथ था हमारे हिसाब से वो गलत जानकारी अपने सारे के सारे कहाँ है No, impossible. तो हमारे लेसर लॉर्ड क्वेश्चन आली मतलब जो कि नहिदा है वो सबसे बढ़िया है फिर Greater Lord Rukkhadevata. So the former Dendro Archon and King Deshret were never enemies at all. But this doesn't make any sense. The Dendro Archon's followers, they're clearly
Was that the former Dendro Archon? She became so tiny in the end. You might be distrustful of the Akasha, but there's no reason for you to doubt King Deshret's technology. You've just witnessed his priest's last words. I've never heard about any of this before. आंखों देखा अगर देखा हो मतलब भाई मतलब जो सामने दिखा हो जो किसी सुना हो उसी पर वो सभी मतलब विश्वास करते हैं। रहमान अगर कोई क्वेश्चन हो तो बाद में डीसी वॉइस पे आ जाना बता दूंगा। आपको मेरी मेहरबानी। ये तो खा लेंगे एक पूरी खा। हाँ वो खा लो ये तो पूरी खा लेंगे वो खा ले। The surviving followers of King Deshret all gathered in Aru village. Our God did not make mistakes. We refuse to believe any of the rumors. King Deshret's death, the all but total annihilation of our civilization, it was all Greater Lord Rukkhadevata's doing. We saw her as nothing more than a traitor, who stabbed us in the back in our moment of crisis. Just like us humans, fighting, feuding, double-crossing each other to survive in the desert. You were blinded by your prejudice. If I hadn't seen this for myself, if I hadn't witnessed his last words with my own eyes, ears, and heart, how could I ever begin to accept this? The truth is so far from what I've always known. Am I really supposed to believe that after all these years, all this time seeking revenge, suddenly now my enemy is my savior? Raman, that's enough. Give it a rest. You're starting to make a fool of yourself. Yep. Dia, tell me. My Aramites and भाई दिख मतलब उसके सामने सारे के सारे सच्चाई है तभी भी विश्वास नहीं कर रहा वो। संतनो डेली आया करो स्ट्रीम पे। यस यस भाई। Hey, वो आते हैं how you doing? डेली आते हैं वो हमारे स्ट्रीम पर। I'll live. Thanks. I should probably go. Can't just stay here forever. What's your next move gonna be? अच्छा 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 तो फिर सो जाना चाहिए आपने 11 बज चुके अभी I feel deeply It's time to ashamed sleep. of everything I've done. You'll get everything you're asking for, but please give me some time. After everything that's happened here today, somehow I need to explain it to the others. It's not gonna be easy. Well, I guess that's for me to deal with. Dia, this is where our camp's located. Make a note of it. When would be a good time for us to go? Kolkata. Tomorrow, I'll convince everyone that we're all on the same side. And I'll return every last one of your your village keepers. We'll share our other resources with you too. एक बार बताया था आपने मगर तब भी शेखर सिंह You seem to finally understand शेखर that our सिंह true भाई enemy नहीं थे मेरे हिसाब is से the तो sages. Yes. The gods never gave up on anyone. It's the people responsible for all of this that need to face the consequences of their action. ठीक है That must have been rough. But he seems to have figured things out now. Ramon's no fool. Being the leader of your own faction in the desert is no easy feat. It's too bad he was held मुझे back भी by नहीं his पता भाई belief in King कोलकाता कहाँ से होता Deshret. है But now that that's changed, I संतनु guess we वैसे have पूछ a few सकते more हो? people on our side. The outcome, at least, is favorable. We should get going too. Let's head back, have a proper meal, and a nice long sleep. We'll need all our energy tomorrow.
stop yelling. बढ़िया ही यार ये तो। यहाँ पर वो उत्तर 24 परगाना सुना है कोलकाता में सस्ते में मल्टी हो, क्या है मतलब समझ रहे हो ना? 912 वाला ये क्या बोल रहे हो आप सभी? हमें कुछ समझ में आ रहा। ओके लीव द डोमेन। चलो साथ में लाचीपुर कहाँ गया ये कहाँ होता है लाचीपुर? शेखर मेरे पास एक सर्वर है, आओगे? अच्छा कौन सा सर्वर कौन सा होता है? सर्वर मतलब जेंशिन वाला सर्वर क्या भाई? प्राइवेट सर्वर्स में काफ़ी मज़ा आता है, मैंने ऐसा सुना है। ठीक है अरे भाई साहब ये कहाँ आ गए हम? ऊपर जाना पड़ेगा हमें। जेनेसेन भाई का भी ज्वाइन कर लेना, कब का भी ज्वाइन कर लेना। लाइव मतलब बनाए, मुझे नहीं पता है कहना क्या चाहते हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। भाई काफ़ी दूर है ये। डीसी सर्वर, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ डिस्कॉर्ड सर्वर अब समझ में आया मुझे। ठीक है मैंने तो आपका सर्वर पहले से ही ज्वाइन किया है मेरे भाई। यार इसकी बैकग्राउंड ऑडियो काफ़ी अलग ही है, मतलब बोर कर देता है यार, ये मूड ख़राब कर देता है। सॉरी गाइस मेरे पास टाइम नहीं है। चांद छुपा, बादल में नहीं छुपा मगर यार चांद है तो।
चांद छुपा बादल में। पहले यहाँ का टेलीपोर्ट पॉइंट अपने को अनलॉक करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम। अरे यार हमारा पड़ोसी थोड़ा बेवड़ा है, ठीक है। हमारा पड़ोसी बेवड़ा है, इसलिए थोड़ा एडजस्ट कर लेना वॉइस। Raman, we're here. Everything's been arranged. Someone will bring the village keepers back to Aru village shortly. I guess all I can say now is मगर thanks for हमारा agreeing to help. रियल लाइफ का चांद भाई बादलों में छुपा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर बारिश हो रही है अभी। अच्छा नाम क्या है तुम्हारा? शेखर सिंह का। Don't mention. मुझसे पूछ रहे थे, मेरा नाम गणेश है और शेखर सिंह भाई का मुझे नहीं पता। But we share a शेखर common भाई का cause शेखर सिंह ही now. होगा। From here on out, संतनु 1 we're और allies. कितना लेती है कोलकाता? अरे क्या है ये? यार ऐसी बातें यहाँ पर मत करो, ठीक है? यहाँ पर ऐसी बातें मत करो, डायरेक्ट अपने डिस्कॉर्ड पर जाओ, वहाँ पर जाकर बातें करो। I'll bring you to them. क्योंकि मेरी ये स्ट्रीम हमारे घर वाले भी देखते हैं, ठीक है? फैमिली फ्रेंडली है, तो यहाँ पर भाई ऐसी बातें मत करो, ठीक है? So these are the people who kidnapped the village keepers. Oh no, it's the scribe! There's no need to yell. No one can help you now. We've been all over the desert trying to find you! That's right. General Mahamatra? No, no! Make it quick, please! Swift and painless! अच्छा Whoa! The moment आ they जाओ set डीसी पे eyes जाओ, on वहाँ पर Final, जाकर they बात कर turn लो pale like they've एक seen दूसरे a से। ghost. जो भी आपको वार्तालाप करनी है वहाँ पर जाकर बात कर You सकते should have हो। known that I would be coming for you. Wait, we were just following orders. You know what I'm talking about, right? There's no way we could have done all this by ourselves. No, not Sino. He's gonna tear us limb from limb. I could do worse. Please have mercy. Start Please have talking. mercy. Otherwise, I'll have to resort to other methods. So, your superiors have kept you quite busy recently. Why? What are they trying to accomplish? They, wanted to extract canned knowledge. Don't play dumb. You know what I'm really asking. They extract divine canned knowledge. Then what? I really don't know how to explain it. भाई यार मतलब काफ़ी बढ़िया, मतलब ये इन्होंने एडिटिंग करी है। नीचे झुकाकर उनके बालों पर हाथ ना डाले बिना बढ़िया है। You better start talking or you'll be sorry! You don't want to make things any more difficult for yourself, do ya? Be my guest. Uh-huh. That sure didn't sound like a fancy metaphor or anything. You're serious, aren't you? How did you know? There's no use hiding it now. Yes, you're right. The Academia is working on an important and potentially world-changing project. They are creating a new god. A god that will belong to them and to the people of Sumeru. भाई साहब, मतलब वो अपना खुद का एक गॉड बना रहे हैं। भाई यार एकेडमिया मतलब इतना कुछ इतने हद तक जा सकती है, हमें नहीं पता था। It may seem as if Sumeru's academics are thriving, but ever since the death of Greater Lord Rukadevata, scholarly breakthroughs have been few and far between. किया हो तो उनके लिए फिर से आप सभी फिर से देख सकते हो, अपनी पुरानी यादें ताज़ा कर सकते हो, क्योंकि मैं पहली बार कर रहा हूँ ये क्वेस्ट, इसलिए मुझे इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। The withering of Ermin's soul has been getting worse recently. The sages have tried everything they could think of, but nothing's worked. I'm always hearing them say things like, if only Greater Lord Rukadevata was still with us. Continue. And then, someone from the Fatui showed up. They called him the Doctor. He brought a gnosis and said he wanted to borrow the Academia's research facilities. Gnosis, भाई साहब। The Doctor was previously expelled from the Academia. At first,
The sages वो looked down डॉक्टर, at him हाँ in वो डॉक्टर disdain. साला But when he said जिन्होंने those सभी के words, सभी everyone's लोगों को expression changed. hypnotize किया था, वही होगा वो डॉक्टर। He asked them, "Do you wish to create a god?" This is what the arrogant ignorance at the extreme end of academia looks like. First, the academia spent a long time constructing a divine vessel, which was based on an exquisite humanoid puppet. After that, they harvested dreams via the Zebzerus festival Samsara, maximizing the Akasha's output. इसे हम पहले भी जा चुके हैं सब ज़ेरो फेस्टिवल में। With the doctor's help, and the Akasha now functioning at maximum efficiency, they were able to use it to extract the power from the Gnosis and convert it into a divine core. अरे भाई साहब, एक्सट्रैक्ट करेंगे नोसिस का पावर, जो कि वेंती के पास था, उसके बाद जांगली के पास था ठीक है, राइडन के पास है मगर, और अपने लेसर लॉल कुसनाली, भाई यार ये तो कुसनाली तो काफ़ी कमज़ोर आर्कॉन है, ये सभी का कहना है जेंशिन में। Next, they decided that their new god needed to possess divine wisdom. For that to happen, they needed a huge quantity of divine canned knowledge. Adds up. But how do you determine whether the knowledge extracted is of divine origin? Call it an educated guess? The academia has been trying to figure out the exact source of the scholar's madness for centuries, but to no avail. Nobody can explain the cause of this phenomenon. Surely you can see what that implies, Scribe Al-Haytham. If it's knowledge no mortal can comprehend, then it must be something only gods are able to decipher. In other words, it's the source of the God of Wisdom's omniscience and omnipotence. बढ़िया यार इनको, मुझे काफ़ी अच्छी इसकी। You must have noticed by now, the academia doesn't care about who their god is. It's the ability to exercise control over knowledge and wisdom that matters. It is as if they are cursed with a desire for omniscience and omnipotence that burns in their blood. ये बात हमें मुझे ये हमारे ट्रैवलर का एक खास बना देती है कि ट्रैवलर ओनली ट्रैवलर, ठीक है, ओनली ट्रैवलर नहिदा को देख सकता है। ये काफ़ी बढ़िया है, इसलिए भाई गेम में इंटरेस्टिंग हो जाता है ये। Some organisms demonstrate phototaxis and thus orient their मतलब हम entire कुछ lives in स्पेशल है, हमारे respect पास sources of light. बहुत अच्छी For the एबिलिटी है। sages, their only source of hope is the existence of a deity who embodies the acme of wisdom. और सच बात करूँ भाई, अगर ट्रैवलर को अच्छी तरीके से बिल्ड किया जाए ना, तो उससे बढ़िया डैमेज कोई दे नहीं सकता, ऐसा मुझे लगता है। This is but a form of phototaxis. For many scholars, the absence of a god of wisdom means stumbling in the darkness for the duration of their lives. Then what does Lesser Lord Kusanali mean to you? Is she not a true god present in this world? If you already have a new god, why try to create another one? From the beginning, the academia has never treated her as a god. When the academia first discovered Lesser Lord Kusanali, the newborn god of wisdom, the sages hoped that she would be as wise as Greater Lord Rukkhadevata. But upon evaluation, they found that at the time she possessed no more intelligence than any ordinary human child. The sages never had a ruder awakening. This forced them to accept that Greater Lord Rukkhadevata had indeed passed away. Not to mention that Lesser Lord Kusanali's Gnosis had been used to power the Akasha this entire time. By herself, she has neither an Archon's raw power, nor the spectacular insight expected of a god of wisdom. Slowly but surely, people began to forget about her existence. So, this is the path the sages have chosen. अच्छा, even now they still confused on acknowledge. अच्छा. All right, let's try to keep our cool. If everyone's in a bad mood, then let's change up our scenery. Rahman, give me a few men to help us escort the village keepers back to the village. And these two scholars, they're coming too. मतलब भाई हमने आपका हो गया लगता है कन्वर्सेशन। Sure. Okay. As you wish. आपने काफ़ी सारा पार्ट मिस कर दिया भाई, ठीक है। आप दोनों ने बहुत सारा पार्ट मिस कर दिया। यहाँ पर बहुत अच्छी बातें मतलब बोली जा चुकी है। अगर आप सभी ने देखा हो तो आपको पता होगा।
कभी आएंगे कोलकाता जब ज़रूरत पड़ेगा। जाओ 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 जाओ। शेखर सिंह नाम है ना तुम्हारा? वो पार्ट मेरे को पता है। अच्छा अच्छा अच्छा, बढ़िया है भाई। मतलब काफ़ी बढ़िया, मतलब उन्होंने बताया था लेसर लॉर्ड कुसनाली के बारे में। मुझे ये विंग के पॉइंट अभी अनलॉक करना पड़ेगा क्योंकि मुझे कभी भी यहाँ पर आ जाने की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए भाई यहाँ पर आया हूँ। तो अरे यार फंस गए। लेसर लॉर्ड कुसनाली वही नाम है ना उसका? अरे यार ये तो यहाँ पर है। मैं कहाँ उधर जा रहा था। पड़ोसी बेवड़ा साला, इतना दिमाग खराब होता है यार। अभी कहाँ जाना है हमें? यहाँ पर। कर लेंगे यार। ब्रो बैकग्राउंड में स्ट्रीम सुन रहे थे। अच्छा 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 अच्छा, बढ़िया है। सुन रहे थे क्या? अच्छी बात है, सुन लो। कर लेंगे यार, आप टेंशन मत लो। आपको ही हमारी शादी में बुलाएंगे, ठीक है? आपको ही हमारी शादी में बुलाएंगे। आपको नहीं बुलाएं तो भाई किसको बुलाएंगे, ठीक है? सभी को हमारी शादी पर इनविटेशन मिलेगा। The village keepers you found have all been returned to their homes, and each one has a dedicated caregiver to look after them. The 2 new scholars are being kept under close supervision too. Really great work, everyone. The atmosphere is यार so क्या है बेवड़ा साला, चिल्लाता रहता साला। मैं पंडित बन जाए यार अब, ठीक है। आपने मुहूर्त निकालना को चाहिए, ठीक है? आपसे हम मुहूर्त निकलवा लेंगे जब हमें शादी करनी हो, वो सबसे पहले। डिस्पाइज एवरीथिंग लेसर लॉर्ड कुसनाली हैव डन फॉर हर पीपल। द academia has abandoned her in the century of सुशांत like lost cause। अच्छा, मैं तो सालियों का ध्यान रखूंगा। रख लो यार। Stop spacing out! Come on, is there nothing left to talk about? In that case, let's all get some water and try to think about something else. Or I can go fetch some snacks. Thank you, Paimon's so Mommy coming with Candace. you. Do you have any plans, traveler? Gods above, you're not talking about work, are you? So you were still withholding some information? Helicon at all। अच्छा। सॉरी गाइज बैकग्राउंड नॉइस के लिए आप सभी को मतलब हमारी तरफ से सॉरी सभी को। Even though we lived through all of this firsthand, it still feels super surreal to hear you talk about it again. संतुलन मेरी क्रश को पता चल गया ना तो कभी हाँ नहीं बोलेगी। ये तो सही है, ये बात आपने सही कही अभी। Story. Felt like I was holding my breath the whole time. It seems like there will be more issues to face in the days ahead than I'd anticipated. Still, now's a good time to make our next move. Now that Raman's joined us, we'll be an even stronger team. भाई ये तो पूरी की पूरी अच्छी टीम है यार। 3 5 स्टार और 1 4 स्टार। मगर उनमें से एक 5 स्टार बेकार है। It's time to make a plan. ये सबसे बढ़िया है।
नहीं ये भी बढ़िया है। Indeed. और ये भी बढ़िया है। These events are a flagrant transgression of the rules in every sense. We cannot allow it to continue. So, everyone, are we on the same page? Crush the sages and rescue our god. That is our ultimate goal. Well, let's brainstorm a little more about what other resources we can draw on. अरे The next time we gather here, we must have a solid plan. Yep, it'll work out for sure. ओके भाई साहब, अरे वाह, रुको रुको, इसको अभी अपग्रेड कर लेते हैं। चलो, हमें फ्री वाला फेड्स मिल चुके हैं, हमें फ्री वाले फेड्स। अक्षय प्लस, अरे वाह वाह वाह, ये इसी क्वेस्ट का मतलब मैं इंतज़ार कर रहा था मेरी जान। क्लेम कर लो इसको। अरे ब्रो, मेरी अभी 3 जेफे 4th वाली को कोई और मिल गया तो ब्रेकअप करके चली गई। अरे वाह वाह वाह, ये भी तो एक और चाहिए क्यों भाई लगता है वहाँ का भाई 3 है और चौथी भी चाहिए इनको। और ऊपर से वो बोल रहे हैं कि नहीं, क्या सालियों को संभालता हूँ मैं। बढ़िया है भाई, कमाल यार। हमारी एक नहीं हो रही, इनके पास 3 4 है, मगर हम करना भी नहीं चाहते। ठीक है, हम करना भी नहीं चाहते, ठीक है, हम करना भी नहीं चाहते। मगर लेसर लॉर्ड कुसनाली, रामपुर। मेरे को वैसे BF सब बेकार लगता है। सही है बॉडी राइजेस आर्म बॉडी बढ़िया है। अक्षय प्लस भाई। चलो भाई, अभी ये मुझे कभी भी देखता है। वेट अंटिल नेक्स्ट डे। Most humans could have the entirety of their fleeting lives chronicled in but a few short lines. Their stories really make for terribly dull reading. इसको कहते हैं सख्त लौंडा। ठीक है भाई, हम किसी को टाइम नहीं देते हैं, बस टाइम में रिचार्ज कर देते हैं बढ़िया यार, काफ़ी बढ़िया बंदे हो तुम। और हाँ, अपने गेमिंग स्ट्रीट भाई बोलते हैं कि मेरे को भी वैसे 3 लड़के ने प्रपोज किया था सही में, पर रिजेक्ट कर दिया। वाह 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 वाह,
भाई बंदे हो तो ऐसे, ठीक है, बंदे हो तो ऐसे भाई, ठीक है। Everyone is already waiting inside. Well, what are we waiting for? Let's join them! Please, wait a moment. Before attending the meeting, I hope you can promise me one thing. What do you need? Promise me that you won't commit to anything too reckless. What do you think? Okay. Reckless? ऐसा क्यों क्या हम मैडम जी आशा प्लस कल्पा फ्लेम्स राइजेस आशा प्लस वाला। अरे वो लड़की सब फालतू है एंड मेरे से 1-2 ईयर बड़े हैं और मेरे तो अगल बगल की है। अरे वाह वाह वाह, अगल बगल की तो अच्छी बात है, बढ़िया यार, काफ़ी नसीब वाले हो तुम तो, अगल बगल की है तो, और बड़ी है भाई, आपसे बड़ी हो तो भाई तो आपसे बड़ी हो तो बहुत बढ़िया। कितने साल बड़ी है? Everyone's here so early. But why और isn't तीनों anybody स्कूल स्टूडेंट talking? है, 11 और 12 में भी वो भी लोग। We already discussed things a bit. Hey, where have you been? I've missed you too. Are you ready? Very well. Okay. Are you sure this is gonna work? I gotta admit, it's bold. Color me impressed. It's worth a try. The point of discussion is to arrive at a solution. Let's cut the small talk and move to the next point. You're making Paimon nervous. क्या हो गया? What happened? ब्लैंक स्क्रीन हो चुकी है हमारी, मगर नीचे लोडिंग हो रहा है, सारे के सारे एलिमेंट लोडिंग हो रहे हैं। हमें कहीं तो भी रिपोर्ट किया जा रहा है। हाँ, लग You're रहा था finally मुझे। done. I have some other stuff to take care of. Catch you all later. Come on, don't give me that face. I know what you're going to say. I'll be careful. That's what I wanted to hear. Take care. Well, traveler, Paimon, judging from your expressions, the meeting must have been quite productive. ओके, बट लव तो एक ही गर्ल से ही, और उसे सिंपल बॉय चाहिए और मैं एक नंबर का हराम। अरे यार, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, आप समाज सेवा कर रहे हो यार। एक साथ 3-3, 4-4 संभालना कोई आम छोटी बात नहीं है। तो भाई एक साथ 3-3, 4 को जितना संभाल लेते हो तो एक को कितना संभालोगे मेरे हिसाब से। तो आपसे ज़्यादा भाई कि आपसे ज़्यादा कोई अच्छा बंदा नहीं मिलेगा उनको। मैं अभी क्लास 12 में हूँ, में से 2 लोग सेम क्लास में है एंड एक कॉलेज में है। अरे वाह, बढ़िया है। You can tell? I'm not that good at scheming or strategy, but I can sense people's emotions. And based on your reaction, things must have gone quite well. Paimon's a little worried. Hopefully nothing will go wrong. To be honest, I feel the same. But you're already some of the most capable people I know. So you have my trust. Candace gave us a compliment. या पैमोन, Your deeds speak for themselves. पर मैं सबको रिजेक्ट किया कर दिया। Candace, we सख्त stood लौंडे behind भाई। to tell you that. Although you बढ़िया won't be बढ़िया coming बढ़िया। with us,
ऐसे होना चाहिए, ठीक है, ऐसे होना चाहिए। अपने एक बार गोल के पास अगर पहुंच गए ना भाई, एक बार अपना गोल अचीव कर लो, उसके बाद ये चेक कर लेना। उसके बाद टाइम रहता है, टाइम नहीं रहता, मगर उस दिन उसके बाद आपकी एक पहचान बन जाती है। उसके हिसाब से आपके लिए जो बनी है वो आपके पास आ जाती है फिर, ठीक है। वो जो आपके लिए बनी है वो आपके लिए ही है। तो ऐसी चीज़ों में ज़्यादा फंसना नहीं चाहिए। अगर आपने अगर अपना गोल बना लिया हो तो उसको पूरा करो, उसके बाद हो जाता। इतना ही बोल सकते हैं अपन, क्योंकि हमारे पास उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं मुझे, इसलिए मेरा पर बेकर। ये कभी काफ़ी सही कहा आपने। You're welcome. And thank you for taking my advice. Good luck with everything. I'll be here in the village praying for you. Thank you, Candice ma'am. जी अब ये सब एक जाल है, लड़की को सिर्फ पैसा चाहिए। हाँ ये तो सही है, ये बात लाखों में एक है भाई, ये बात आपने लाखों में एक कही है। पैदल क्यों जा रहे हैं हम? Sounds good. I'll go make some preparations. Okay. I'll hit them. Have you finished saying your goodbyes? Yeah. Also, Candace told everyone to be careful. हाँ संतनु, ये बात तो सही है। कहाँ सब गर्ल्स पैसे पे मरती हैं? यस। Yes, she did. पैसा But I think my point पैसा also है bears तो वो repeating. बोलेंगे हम कैसे है। अगर जेब में पैसा है तो वो सामने वाला बोलेंगे तो कैसा है भाई, ठीक है। अगर आपके पास आपके जेब में अगर पैसा नहीं हो तो आपने को वो भाव भी नहीं देती, ठीक है। जब तक आपके पास पैसा है तो आपको सभी जो आपको जानते भी नहीं है वो भी आपको बोलेंगे। We must go beyond that Yes. and fully commit ourselves to ये it. सब सही कहा भाई। I hope this is clear to you. Huh? Shouldn't you be saying something more cheerful to boost our morale right now? Didn't we already do that during the meeting? You can never have enough words of encouragement. In that case, Candace can cuddle you to your heart's content while I continue to remind you of the seriousness of our situation. मेरे पास बाइक है, ऊपर पैसा भी है। हाँ, We all have इसलिए our तो jobs भाई, to do इसलिए तो after भाई all. लड़के आपके It's पास like how some people लड़के can be put आती in हैं। charge of logistics while others will fight on the front lines. Speaking of the front lines, you don't look anything like a soldier. Well, of course. Compared to the तो मेरे mercenaries, पास I'm भी है, merely a हम feeble खुद scholar. कमाते हैं और उड़ाते हैं। अरे वाह, But the advantage of not ये being बात a सही कही आपने, mercenary is एकदम that बढ़िया। I get to stay in ऐसा a होना safer चाहिए place and सभी offer my बंदों ने। strategiक insight. Just think about that mercenary who lost his mind. Mercenary groups are facing constant danger every single day. वाह, Well, being a scholar is also a high-risk occupation, and you are a scholar. I'm not like the rest of them. Even among members of the same species, some will exhibit far more potential than others. This guy. Hyman कितना still मनते? remembers when those mercenaries in Port Ormos called you a lunatic. All intellectuals are lunatics in the eyes of fools. I'll take that as a compliment. That reminds me. Do you remember the record we saw in the King Deshret ruins? बैक और पैसा है mentioned इसलिए forbidden लड़कियां knowledge. भाव देती है और ये बन जाती है जल्दी। You have a good memory. Forbidden knowledge has the power to drive people insane, but this fact has never been shared with the public. Even I, who has worked in the academia for some time, was never once informed of this. I think those mad scholars and mercenaries we encountered may have all fallen victim to the corrupting qualities of forbidden knowledge. But the academia has always held a different view. They have always believed that symptoms of madness are a side effect of human contact with divine knowledge as mere mortals. वाटरमेलन बेच कर, अच्छा वाटरमेलन 500 के 600 के कमाया है। बढ़िया है वाटरमेलन, Come to think of it, बढ़िया है भाई।
Perhaps the academia has also never ऐसे कैसे understood the व्यापार true करते हो? nature of मतलब forbidden होलसेल knowledge, भाव से and thus always बेचते हो approach the क्या? issue from the wrong व्यापारी हो क्या direction. भाई? The Withering, मेरे हिसाब से Elazar, and the Sandstorms. Don't you think what is happening right now across Sumeru is rather similar to the forbidden knowledge pollution that occurred in the desert thousands of years ago? But Paimon thought that Irminsul's disease is what caused the withering and the sandstorms. At least, that's what Tainari told us. Wait a second. Could it be that? Ah, you've connected the dots. The cause of Irminsul's illness may precisely be the pollution from forbidden knowledge. But if that's the case, 4 month मेहनत किया what है. should we do? अरे वाह 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 This वाह. is huge. भाई साहब बहुत बढ़िया. Wait. Why do you think Lesser Lord Kusanali would have a solution to this situation? You mean it's related to the scene you saw when you passed out in the Avidia forest? That whole the world forget me thing? Nice. In that case, it's imperative that we rescue Lesser Lord Kusanali. Only by working with her to save Irminsul can we completely resolve the problems Sumeru currently faces. बहुत बढ़िया यार. To make sure we're still on track, I would like to check on the हमारे state of देश some of के our preparatory work. फार्मर के लिए शेतकरी, हमारे मतलब मराठी भाषा में बोलते हैं उसको शेतकरी. तो शेतकरी किसान को हमारी तरफ से आपको सैल्यूट है भाई. आप मेहनत करते हो इसलिए हमको खाने को मिलता है. Where are we going? सैल्यूट आपको. To an Aramite base. जितनी रिस्पेक्ट मैं अपने देश के फौजी को करता हूँ उतनी रिस्पेक्ट मेरे मन में मतलब अपने किसान भाइयों के लिए भी है. वो मेहनत करते हैं इसलिए हम खा पाते हैं भाई. ये यहाँ पर कहाँ क्यों गया भाई? तू क्यों ऊपर गया मेरे भाई? They're here. मेरे डैड कोलकाता कॉरपोरेशन में 1 लाख के हाथ पर कमाते हैं शायद. अच्छा. बहुत बढ़िया. What are they doing? I gave them some technical work to do. Ah, it's the scribe. And is that the traveler I see? How's the work going? Ah, yes! We have fixed the devices according to your instructions. One of them is already ready for use, while the others are still under repair. Aren't those devices for canned knowledge extraction? What are you doing with those? Look here. Huh? More canned knowledge? Are you going to put more weird stuff into his head again? What's that look on your face? Are you scared? Paimon's a little scared, but very, very furious! That's an interesting response. Anyway, we're not going to use this just yet. As I mentioned during the meeting, this knowledge capsule contains a decree I drew up in the past. The academia should also have their own copy. And according to the plan, Traveler, Gambling. I want you to record something into this capsule. Do you believe we can save Lesser Lord Kusanali? हाँ सोच रहा है कि खेती और हाई करके 1 मिलियन कमाने का सोच रहा है. अरे कर लो यार. हमारी तरफ से आपको बहुत सारी बधाइयाँ यार. कर लो keep it up. ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहो और अपने बिजनेस के भाई अपने व्यापार में आपको बहुत अच्छी तरक्की मिले. यही हमारी तरफ से आपको आशीर्वाद है. और मैंने पापा को सरकारी जॉब है. अरे वाह बहुत बढ़िया. Now, please get ready and put on this device. You want us to record our conviction into the knowledge capsule? Yes. Paimon is still really... I understand, but trust me, Paimon, this is something we have to do. It's best if you can do as I say, because to achieve this impossible task, it sounds like you'll need to fool your own heart first. Although it may feel like a trick, self-encouragement may be the most important tool we have. Paimon can see the point you're trying to make. Imagine this.
we have orchestrated our plan and successfully rescued Lesser Lord Kusanali. As a result, we have changed Sumeru's entire political landscape. Everything went without a hitch, and everyone recognizes and praises our achievements. Now, open your eyes. Here. What's this? गुड नाइट भाई। शेखर भाई 5 नंबर पे है। हाँ वो तो है। अब मैं भी जाने वाला हूँ 5 मिनट में। 12 बजे मुझे बंद करने का है। कल कॉलेज जाना है। करो कॉलेज जाओ भाई। अभी सोना पड़ेगा, मुझे भी सोना पड़ेगा। बाय शेखर भाई, थैंक यू फॉर कमिंग। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं भी 5 मिनट में जाने वाला हूँ। थैंक यू फॉर कमिंग। Is your head okay? Does anything hurt? It's just a recording. There should be no negative effects. But what was the point of doing this? Paimon doesn't get it. And that's perfectly fine. In any case, these capsules aren't meant to be used by you. Huh? What do you mean? Have you forgotten? Our plan needs to account for those who have long relied on the Akasha. You may find it hard to believe, but for those people, everything the Akasha transmits to them is nothing short of absolute truth. Imagine if you've been using a device like the Akasha since the day you were born, and this device has always supported you during times of need. After all that time, what do you think you'd become? A fool? A machine? A slave to orders. And that's why rules are so important. In addition, those who understand the rules can delineate boundaries and identify gray areas. But why would you need to identify the gray areas? You could say that those kinds of ambiguous zones can be very interesting. One might even say they're advantageous in the right hands. चैट नहीं दिखाई दे रहा मुझे, मगर भाई अंशु कुमार अगर आ चुके हो तो हमारी तरफ से उनका बहुत बहुत शुक्रिया फिर से। अभी पहले आए थे वो मेरे हिसाब से तो, मगर उनका चैट मुझे नहीं दिखाई दे रहा। अगर वो आए हैं तो मेरी तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत है मेरी स्ट्रीम पर। मगर भाई अभी मैं 3 मिनट में जाने वाला हूँ 12 बजे। ठीक है। Anyway, that's enough chit-chat. हाँ ब्रो, अच्छा। I'm going to take those two to work on some small projects. You can head to Caravan Rebot and start preparing for the next step. Small project? We are going to tinker with the Akasha terminal and make a few modifications. मैं क्या मैसेज बट शो नहीं कर रहा था तुमको? यस आपने मुझे मैसेज किया था, मगर मुझे यहाँ पर शो नहीं हो रहा था। कभी कभी टर्निप का कुछ ग्लिच हो जाता है मेरे हिसाब से। I thought we agreed on a plan. How can you go back on your word? The plan is too radical and carries a high risk for casualties. I've given it a lot of thought. And in the end, I still can't agree to it. But it's still the best plan we have. As a former Matra, you of all people should be able to see the bigger picture and recognize the innate advantages of our plan. I did. And that's how I saw the danger behind these so-called advantages. Ohhhhyaah's plan is even more radical than I imagined. Huh? Why are you guys arguing? My friend, you're just in time. Why don't you help me persuade Sino? He's turned against— We agreed to work out a plan at the meeting. As mercenaries, you're familiar with the local environment, so you'll take care of the specifics. But then, you went to Ohhhhyaah for suggestions. Had I known Ohhhhyaah would give you those kinds of suggestions, I would not have agreed to the plan. Okay, bye. Thank you for coming, भाई। हम भी जाने वाले हैं अभी। इतना कन्वर्सेशन पूरा होने के बाद मैं भी जाने वाला हूँ अभी। Look, you already know that we're all on the same side here. और थैंक यू भाई गेमिंग शूट भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी स्ट्रीम पर आने के लिए। आप मेरी स्ट्रीम बंद होने के बाद ही जाओगे, मुझे ऐसा लग रहा है।
और आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी स्ट्रीम पर आने के लिए भाई, आपका भी और अंशु कुमार भाई का भी, क्योंकि स्ट्रीम चालू होने से ख़त्म होने तक आप यहाँ पर हो। Mercenaries place a lot of importance on their bonds of friendship, but also will not hesitate to make sacrifices if they deem the situation to be sufficiently dire. I'm sorry, but as things stand, I can't accept your principles. Seems you really do understand the ways of the desert. Traveler, Paimon, this is also something you should know. Ramon's plan is to have me work with the caravan Reebok guards in my capacity as a Matra. We will arrest the mercenaries and escort them into Sumeru City. Wait, how can we work with the guards? We can't get through that wall easily, remember? Caravan Reebok would never let so many unregistered members of the Eremites enter. My plan will clear us of any possible suspicion, and also let us enter the city as a big group. There is no better way. That also sounds like something Ohhhhyaah told you. Am I right? Doesn't Ohhhhyaah know how dangerous this plan is? Of course he does. He told me, there is no perfect plan, but this can get the job done. He also said that with the help of Sino and the Traveler, our chance of success would increase significantly. I never blindly trust anyone, and I've always had a good eye for people. I think he made a number of valid points. It's my own choice. कभी-कभार मतलब होता नहीं है भाई ये, मेरे हिसाब से तो कभी-कभी ग्लिच हो जाता है. If I make the arrests alone, I can control myself and prevent you from getting hurt. But I can't guarantee that kind of discipline from the guards. Streamlabs कभी-कभी काम नहीं करता लगता है. To make the whole thing more convincing, you'll need to resist to some degree. Casualties are inevitable once push comes to shove. I'm okay with the deaths of enemies. But now that we're allies, I'm against the meaningless loss of our own. I can't believe a Matra would actually care about us. I've lived a hard life. I can say that people like you are hard to come by. कर लो. I've always treated my allies with honesty and respect. They have the right to know important things like this. Now you're making this hard for me. Hey, is there something we can do to help? I knew you would say that. We can help fight some of the mercenaries, which should reduce the number of times you'll have to struggle directly with the guards. That should help at least a little bit. Sino, on behalf of my people, I thank you for your kindness. But this is a mission we cannot turn our backs on. We strongly value the lives of our friends, but the goal we are about to achieve is even more important. We have no fear of casualties, because we crave the spoils of victory. So please, lend us your support. We will show you the determination of us desert. Well, now that you've put it that way, I can no longer refuse. 11 घंटे हमारी स्ट्रीम देखी है भाई आपने, बहुत बढ़िया. Thank you. But remember, you need to follow the plan and not do anything reckless. Candace made it very clear that we can only achieve our goals if we can ensure our safety. Since you and I both recognize the significance of this operation, there should be no more animosity between the followers of the Dendro Archon and those of King Deshret. Everyone's life is equally important. Okay, you have a deal. Let's do this for our shared dream. The guards should be stationed in the courtyard nearby. You can find them there. ठीक है, अभी इसको बाद में कर लेते हैं. अभी 12 बज चुके हैं. अभी शुक्रिया गेमिंग शूट भाई, अभी जाना पड़ेगा. अभी 12 बज चुके हैं, 12:04 हो चुके हैं. अभी मुझे जाना पड़ेगा. गुड नाइट आज के लिए. थैंक यू फॉर कमिंग. हाँ, अभी यहाँ पर क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसको बढ़ाया तो
बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा फिर। ठीक है, तो अभी यहाँ पे अभी क्लोज करना पड़ेगा मुझे। अभी हमें जाना पड़ेगा। गुड बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। शिवरात्रि, शिवरात्रि, शिवरात्रि। थैंक यू फॉर कमिंग। होगा क्या? गैम्बल हो जा? नहीं हो रहा क्या? ठीक है भाई, कल करेंगे अभी गैम्बलिंग। आज की हो गया अभी। गुड नाइट, बाय। शिवरात्रि, शिवरात्रि, शिवरात्रि। पीस आउट।